जी On the last date, my lord, there was some confusion regarding the counsel appearing for the respondent, my lord. जी For that reason, the case was adjourned for नहीं 20. नहीं ऐसा नहीं है, Rather, some आपने भी कहा था श्री लर्नेड श्री सीनियर एडवोकेट फॉर द पिटिशनर is not ready with the matter. He prays for a week's time to argue this case. On his request, case is adjourned. At this stage, Shri Rohit Mishra, advocate, appears and submits that he had appeared for the respondent on the last date of hearing on the instruction of the officer in charge, who had, under confusion, instructed him to appear, whereas he has no wakalatnama in the said case. Let instructions be called for by Shri Vibhudendra Mishra. चलिए, नहीं आएंगे तो उनको घर थोड़ा ना बनाने जाएंगे, बहस शुरू करिए. My lord. My lord, wide and XP 2, my lord, the petitioner was appointed as a project assistant जी in the department of botany, my lord. बॉटनी, Botany. प्राणी शास्त्र को तो मेरे ख्याल से जूलॉजी बोलते हैं, बॉटनी को वनस्पति शास्त्र बोलते हैं. पढ़िएगा P2. Yes. लैब टेक्नीशियन प्राणी शास्त्र विभाग के ने महोदय के अनुमोदन टीप के आधार पर 89 दिन के लिए कौन सा वेतन पर लैब टेक्नीशियन नियुक्त किया जाता है. श्री स्वदीप श्रीवास्तव Swadip ने Shrivastava, दिनांक को विभाग में टेक्नीशियन पर. तो प्राणी शास्त्र तो जो होता है वो Biology. जूलॉजी होता है, बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी होता है. my lord. और वनस्पति शास्त्र जो है That is बॉटनी होता botany, है. बॉटनी में नहीं, जूलॉजी में थे. Zoology. जी So he was appointed the technician, my lord. जी Later on, my lord, the selection committee जी that was constituted and selected the present petitioner जी for the post of assistant, my lord. कहाँ है वो? Annexure P3 में kindly seen, my lord. P3. विभागीय स्थायी चयन समिति के समक्ष उपस्थित के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर चयन हेतु. यस my lord. हाँ, अपने साथ शैक्षणिक योग्यता इतना इतना तथ्य लेकर Then आवश्यक है. annexure P4, my lord. हाँ, P4. स्वीकार तो अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं इसको, ये तो स्थगित की गई है. रिलेवेंट बताइए ना. my lord. Annexure P11 is the order, my lord, by which the petitioner has been ordered to be terminated. भाई, वेयर इज द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन? My lord. Annexure P. कब हुआ नियमितीकरण इनका? He was regularized on 17/8/98, my lord, by Annexure P7. हाँ जी. On the क्या लिखा है recommendation इसमें? of प्राणी शास्त्र विभाग में संचित दैनिक वेतन पर कार्यरत इतने को के नियमितीकरण के प्रकरण में समिति द्वारा की गई अनुशंसा को मान करते हुए उन्हें प्रयोगशाला तकनीशियन इतने इतने देहों से नियमितीकरण स्वीकृत किया जाता है. ठीक है. P7 इज द ऑर्डर ऑफ रेगुलराइजेशन. my lord. P7. ठीक है. फिर Then Annexure P8 में kindly be seen, my lord. जी Some complaint was made हाँ, by one of the person who ultimately withdrew that complaint. तो क्या हो गया? वो तो फंक्शंस ऑफ इशू था, शिकायत करके खत्म हो गया. जैसे आप रिट ऑफ क्यू वारंटो लगाते हैं, My lord. आपने लगाई, आपका सूचना देने का काम खत्म हो गया कि फला फला व्यक्ति नियम विरुद्ध तरीके से पद धारित कर रहा है. My lord. इट इज नाउ बिटवीन द कोर्ट एंड दैट पार्टी. My lord. सिमिलरली once a He complaint, withdrew the complaint, my हाँ, lord. he may have withdrawn the complaint. Thereafter, my lord, ये पढ़िए तो इसको जरा. इसको इतने अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ये पढ़िएगा ना, उसमें पूरा कारण दिया हुआ है. श्री स्वदीप श्रीवास्तव के लैब टेक्नीशियन के पद पर नियम विरुद्ध नियमितीकरण किए जाने संबंधी इस सचिवालय में प्राप्त शिकायत पर विश्वविद्यालय के तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई. उपलब्ध जानकारी के आधार पर परीक्षणों प्रकरण में निम्नलिखित अनियमितताएं होना प्रथम दृष्टया पाया गया है. जी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित विश्वविद्यालय के नियम
के प्रावधानों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग का निम्नतम वेतनमान में नियुक्ति पद विज्ञापित करने तथा अथवा रोजगार कार्यालय से नाम बुलाने के पश्चात खुले चयन द्वारा की जाएगी। जी न्यूनतम वेतनमान के ऊपर 2 पदों पर नियुक्तियां पदोन्नति अथवा खुले चयन द्वारा की जाएगी। पदोन्नति या चयन द्वारा नियुक्तियां केवल चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार एवं पद के अनुरूप उनकी योग्यता के लिए जांच के लिए परीक्षा आयोजित कर चयन समिति की अनुशंसाओं पर ही की जाएगी। कुलपति द्वारा चयन समिति बताइए के कहाँ है आपका विज्ञापन? विज्ञापन कहाँ है? My lord, I was called for interview on my application नहीं submitted. भाई वकील साहब, रेगुलेशन की बात अलग है। आप My प्रभावशाली थे, आपको बुला लिया इंटरव्यू के लिए। lord, Where is along with you are required to show either of the twin requirements, that या तो विज्ञापन निकाला गया था या रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए गए थे। पहली रिक्वायरमेंट ये है, इनमें से किसकी पूर्ति आपने की? white P3, my lord, I was called for. अरे भाई वो तो पढ़ देख लिया, आप हमारी बात का जवाब तो दें वकील साहब। I was already working on daily wages, my lord. What I'm asking you, you are not, by avoiding my questions, you will not be able to get anything. चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ फिर क्या हुआ? Then, my lord, the complaint that was withdrawn, हाँ white annexure P10, my lord. जी And P11 is the order impugned, my lord, by which, by the office of the chancellor, जी I was ordered to be removed from service. जी जी So my contention is that I have already worked for about 30 years, my lord. जी जी And क्या thereafter स्टे ले लिया था आपने यहाँ से? क्या stay स्टे था क्या हाई कोर्ट से आपको? उसकी जानकारी नहीं। तो फिर 30 इयर्स कैसे हो गए आपको? बिगैर स्टे के 30 इयर्स कैसे हो जाएंगे? On 19/11/95, my lord, I was appointed. अरे वो तो ठीक है, 95 से 30 साल 2025 में होंगे, ठीक है। और आप 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, स्टे है नहीं। P11 की जो डेट है वो है 2003 की। My lord. 95 और 3 8 साल की तो नौकरी हुई, तो 30 साल कैसे होगा आपको नौकरी करते हुए? और पूर्व जन्म की नौकरी जोड़ दी गई है क्या? My lord, without holding any inquiry against me, without. चलिए, दिस पिटीशन इज फाइल्ड being aggrieved of the order annexure P11 dated 30th of December. 30th December 2003, passed by the state government in terms of the directions of the Chancellor of Dr. Harisingh Gour University, dispensing with the services of the petitioner and directing to take action against four professors four persons whose names have been mentioned in the said order, namely Professor Radha Raman Tripathi, in charge registrar, comma, Professor V.K. Dikshit, D. Then Dean, College Development, University Development Council, comma, Professor S.C. Agarwal, Dean, Life Sciences Department, and Professor D.P. Gupta, Head of the Department of Zoology. Next paragraph. Petitioner's contention is that petitioner was appointed as a daily wager. Sorry, petitioner is also aggrieved of the order dated
31/12/2003/1/1/2004 passed by the Registrar of Dr. Harisingh Gour University, Sagar, dispensing with his services in terms of the orders of the Chancellor, invoking the provisions contained in Section 12 within bracket 4 bracket close another bracket capital A bracket close of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973. Next paragraph. Petitioner's contention is that petitioner was appointed as a lab technician on a daily wage basis, wide order dated Annexure P2 with effect from 19/11/96, wide order dated 7/1/97. Thereafter, he was called for interview, wide communication dated 28/4/98, Annexure P3, but that interview was cancelled, wide Annexure P4, and then he was again asked to appear before the department on 11 wide communication dated 11/6/98. Full stop. On 5/8/98, a certificate as contained in Annexure P6, a certificate was given by the head Department of Zoology to the effect that petitioner is working on the post of lab technician, which is a budgeted post in the department on consolidated salary since 1911-96. His work and conduct is satisfactory. Full stop. Thereafter, order was passed on 17/8/98, giving him appointment as lab technician in the pay scale of rupees 4,000-100,000, passed by the then registrar of the university. Next paragraph. Thereafter, a show cause notice was given to the petitioner as contained in Annexure P8 by the additional secretary to the governor, pointing out that all class 3 and class 4 posts are required to be advertised or names are required to be sponsored through the employment exchange, and then thereafter appointments are to be made through open selection. Full stop.